मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं पेश हुआ हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं 10 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन इंडिया। ट्रैवल वीडियो है। गोल्डन टेम्पल, ओके, हरिद्वार, nice. India is an enormous and diverse destination, bordered by 7 different countries, not to mention the Arabian Sea and the Bay of Bengal, means that there are many different sides to the country. Mumbai. More than 20 official languages, multiple religions, and a variety of cuisines exist within India's borders. To truly experience the breadth of Indian culture and history, travel is key. Here's a look at the best places to visit in India. Nice. Wow. It must be a temple. मुझे बहुत चीजें अच्छी लगती हैं यार इंडिया की। Wow. Number 10, Udaipur. Udaipur. The city of lakes, Udaipur glistens romantically on the edge of the desert in Rajasthan. The city is protected by lush hills and is where you can find the mesmerizing Lake Palace in the middle of a tranquil lake. Another captivating sight is the imposing but graceful City Palace, along with the Monsoon Palace, which stands out with walls made of gleaming white marble. Explore old temples, walk the winding streets of this fanciful corner of India, and slip into times past inside its ancient bazaars. Beautiful, beautiful. I love the architecture यार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है। हैंड पेंट है। पाकिस्तान कराची में भी एक जगह है मोहट्टा पैलेस, हल्की हल्की उसकी वाइब दे रहा है क्योंकि वो भी महल है, ये भी महल टाइप है। मंदिर बहुत प्यारा है, दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। सनसेट यार, सनसेट, वाओ। Number 9, Amritsar. Amritsar. The Punjabi city of Amritsar lies on the border with Pakistan and is home to the holiest of Sikh sites. The Golden Temple is in the heart of the old walled city. This serene Sikh shrine provides a place for reflection and inspiration. You can tour the Golden Temple regardless of religion, but you will need to show respect by covering your head and removing your shoes. The streets surrounding the temple are a frenetic fusion of people, markets, and activity. Be sure to pick up some traditional goods, such as hand-embroidered fabrics and delicately ornate shoes. ये गोल्डन टेम्पल का लंगर होगा, लंगर यहाँ पे मिलता है। Number 8, Ladakh. Ladakh. In northernmost India, in the heavily disputed Kashmir region, is the mountainous destination of Ladakh. This region is large, but it has a low population density and a number of nomadic residents. Breathtaking, pristine scenery is a major draw to the area, but virtually all travelers will also spend time in the town of Leh. The town is located at a very high elevation, and it is home to the 17th century palace of the king of Ladakh. Buddhist culture is also prominent in Leh, and you may wish to explore some of the many Buddhist monasteries and temples. पहाड़ों के बीच में, wow. Number 7, Goa beaches. On the western coast of India is Goa, a former colony of Portugal that blends Indian culture with colonial influences and plenty of international tourism. Goa is popular largely because of its spectacular beaches. The busiest of all is Candolim Beach, where travelers from around the world flock to soak up the sun. Anjuta Beach, by contrast, is far less crowded.
It is also an amazing place where you can walk to Chapora Fort and admire the sandy coastline from a new perspective. Palolem is considered one of the most beautiful beaches in all of Goa, with its natural bay surrounded by lofty headlands on either side. ये क्या कर रहा है? क्या सनसेट के टाइम कितना अच्छा लगता होगा ना बीच पे। Yoga on a beach, wow. Wow. Number 6. Delhi. If you're spending any time in northern India, you will almost certainly visit the capital city of Delhi. The enormous, sprawling destination is home to several districts, and it is considered to be one of the oldest cities in the world. One of the top sites in Delhi is the Red Fort, which was built in the 17th century. The Red Fort is made from sandstone, and you will be able to walk through its Lahore Gate, into the bazaar, through the Jewel Palace, and even into the former residence of the Sultan. While in Delhi, you should also make time for the many museums and religious structures that make up the city. Skip. दिल्ली और कराची में बहुत सिमिलरिटीज हैं यार। पहले शॉट पे मुझे ऐसा लगा कि कराची वाला है वाइब आ रहा है, फुल कराची का वाइब आ रहा है। सोचो यार इतनी Number सारी वीडियोस 5. कौन बनाता होगा? Ellora मतलब and Ajanta इतनी जबरदस्त caves. यार। In the state of Maharashtra, you can explore the caves of both Ellora and Ajanta. At Fine. Ellora, there is an enormous complex of shrines ये कहाँ पे carved है? from the rocky landscape. These 34 cave shrines are up to 1,500 years old, and they are from 3 distinct religions: Buddhism, Jainism, and Hinduism. 2 hours away is Ajanta, which is home to 29 caves. The Ajanta caves are covered in murals and paintings, most of which reflect Buddhist stories. While the 2 cave complexes are 2 hours away from one another, it is well worth visiting both to compare these incredible attractions. वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त। Buddhism. Number 4. Varanasi. A city that may seem strange to many Westerners, Varanasi is of great religious importance. The holy city sits on the banks of the divine Ganges and is believed by Hindus to be a sacred place of pilgrimage. The city is known for the religious practices that take place on the Ghats alongside the river. Pilgrims wash themselves in the waters of the Ganges, and the bodies of Hindus are cremated. The sights of life and death along the riverside can be shocking, but a visit to Varanasi is also contemplative and ultimately helps visitors to further understand India's deep cultural and spiritual practices. इतना खूबसूरत है यार, इतना खूबसूरत है। एक बार तो मुझे इंडिया जाना है, एक बार तो जरूर जाऊंगा घूमने के लिए। Number 3. Kerala. The southwestern state of India, known as Kerala, is a place of tropical beauty.
Palm trees, white sand beaches, and ecotourism are all big reasons to explore the region. Besides its famous backwaters, elegant houseboats, and temple festivals, Kerala is also home to the Tekadi Tiger Preserve. The hub of Kerala is the city of Kochi, where you can see the local fishing industry thriving, along with modern high-rises and colonial architecture. केरला इतना खूबसूरत है. So green यार, so green. बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत. लिस्ट में ना ऐड ऑन होती जा Number रही है 2, जगह है. Agra. Agra is known for one thing, the iconic and ultimately impressive Taj Mahal. Set on the south bank of the Yamuna River, the Taj draws millions of tourists a year. Built by an emperor as an extravagant memorial to his wife, the mausoleum's porcelain white marble is an emblem of romance and adventure. Agra itself sits in the shadows of its imposing monument, but is a small and welcoming city. The ancient Mughal-era Agra Fort is an attractive spot to visit. Peer over the walls and catch your first hypnotizing glimpse of the Taj. Taj Mahal. ये क्या है यार? आगरा ताजमहल. इसके बारे में नहीं पता है. Number 1, Jaipur. The pink city of Jaipur is the capital of Rajasthan and is where you can find the beautiful Amber Fort, a sprawling, stunning complex set in the hillside overlooking a lake. Located just outside of the city and built in 1592, the grandiose citadel was also a palace for some time, but is now an impressive tourist attraction. Make sure to take a trip to the opulent city palace with its stunning courtyards and gardens, plus the amazingly intricate Palace of Winds. Jaipur forms one corner of the Golden Triangle, and it also makes a great gateway into the lesser-known destinations within Rajasthan. हमारा भाई जावेद से जयपुर एक दिन. वाह, क्या टाइमिंग है यार. इसने भी वीडियो बनाई, बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग है यार, बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग है. टाइम लैप्स थेरेपी यार. आई मीन and I love it bro, I love it. इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह इंडिया में. केरला का मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा है. मैंने सुना था लेकिन मुझे पता नहीं था कि कितना अच्छा है. ठीक है, वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. और वाराणसी का जो है मैंने देखा नहीं था पहले, लेकिन हम देख लिया तो बहुत अच्छा है. जयपुर तो मेरी लिस्ट में था कि यार अगर मैं कभी ना कभी इंडिया गया, जयपुर राजस्थान जो है ज़रूर घूमूंगा. ठीक है. दूसरा दिल्ली, और हमने दूसरी जगह भी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत. अमृतसर तो यार मुझे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है. क्यों? गोल्डन टेम्पल वहाँ पर है. ठीक है. तो अगर मैं इंडिया गया तो हमारा जो रास्ता होता है तो वो लाहौर से फिर अमृतसर दिल्ली ये होता है. तो भाई गोल्डन टेम्पल इज़ लाइक फर्स्ट प्लेस टू गो इन इंडिया इफ़ आई एवर गो टू इंडिया, इफ़ आई एवर विजिट टू इंडिया. ओके. सो मुझे बहुत मज़ा आया यार ये चीज़ें देखकर. इंडिया की इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इतनी
सुंदर जगह है, सुंदर कहूँगा क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत कहते हैं, ठीक है। सो मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर। मैं और भी इंडिया की वीडियोस देखूँगा। मुझे देखना है कि इंडिया में और भी कैसी चीज़ें हैं, लाइक इंडिया के खाने कैसे हैं, इंडिया के और कल्चर कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया का सुनते तो हम लोग बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन इनसाइड जो कल्चर होता है बहुत सारे उसमें जो है ब्लेंड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है नॉर्मल बंदे को, ठीक है, जब तक हम लोग देखते नहीं हैं। सो मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर मज़ा आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वो बेल का बटन दबाना मत भूलें, ठीक है। जूता मारो, चप्पल मारो, जो भी मारो, लेकिन वो बेल का बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। समझदार तो आप हो, ठीक है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े भाई का एक छोटा सा रिमाइंडर। इतने प्यारे लोग हो यार, कसम से। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो माय नेम इज़ धीरज, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, साइनिंग आउट। सी यू नेक्स्ट टाइम।